Frederick Douglass, one of the most influential figures in American history, overcame unimaginable challenges to become a voice of freedom and justice. This video follows his journey from birth in rural Maryland to his rise as a leader and abolitionist. Witness his trials from his early years in slavery, the separation from his mother, and the cruelty of his captors, to his eventual escape and determination to fight for the freedom of others. Through powerful storytelling and emotional depth, we explore Douglass's unwavering commitment to equality and liberty, his transformation into an eloquent speaker, and his lasting legacy in the fight for human rights. In the rural heart of Maryland, a child was born. His name was Frederick Douglass. The shackles of his destiny were unseen, as he sat barefoot on the dirt path outside a weathered cabin. Surrounded by tall grasses and cotton plants, the fields stretched endlessly before him, a world that would shape him in ways he could never predict. His eyes, filled with both curiosity and an unspoken understanding, were drawn to the open sky above. A simple beginning, yet one that would ignite the fire for a life of resistance and resilience. Frederick, just a boy, wandered among the children of the plantation, playing, laughing, and learning, yet feeling an unbridgeable gap. His clothes, torn and patched, set him apart from the others, and the weight of his difference was clear in his gaze. A sense of longing settled in his heart, for the life he saw in them felt unreachable. Who was he, and what was his purpose in this world of privilege and pain? The questions lingered, unanswered, yet burning with intensity. The moment Frederick Douglass was separated from his mother, his life was changed forever. As a crying infant, he was carried away by an overseer, leaving behind a mother who would never see her son again. Harriet Bailey's outstretched arms reached for him, a silent plea for the bond that no law could sever. As they disappeared down the long, dusty road, her heart broke, and Frederick's journey into the unknown began. Harriet Bailey's love for her son never wavered, even when separated by distance and time. On moonlit nights, she traveled through the woods to visit Frederick, holding him close in the fleeting moments they shared. Her weary feet carried her through the forest, where gnarled trees stood like silent witnesses to a mother's devotion. In the darkness of their small cabin, she held her son's hand, whispering words of hope. Love was the only thing that remained constant in their broken world. The field was silent as the overcast sky loomed above, and the heavy air carried the weight of sorrow. Harriet Bailey, the mother who had fought against the forces that sought to tear her family apart, was gone. A simple grave marked her resting place, and Frederick, now a young boy, sat beside it, his face a blank canvas of grief. In that moment, he understood the cruelty of the world. His mother's life had been stolen, but her spirit, her love, lived on in him. A whisper was all it took to set the wheels of curiosity turning. Frederick overheard a conversation that would forever change the course of his life. It was the mention of a man who might be his father, a man whose face he had never seen. The truth was elusive, hidden behind the walls of the plantation and the veil of silence. As Frederick stood in the shadows, his heart raced. Was this the key to his identity? Would the truth give him the strength to break free? The fields were hot, the sun relentless as Frederick Douglass worked the cotton fields, his small hands calloused from the weight of the labor. The overseers rode on horseback, their whips poised to strike. The children, no older than he, worked alongside him, sweating, toiling, and yet knowing nothing but hardship. The world around him was one of brutality, yet Frederick's spirit remained unbroken. He was determined, deep within, to one day be free. Captain Anthony's cruelty knew no bounds. The sight of his aunt, tied to a wooden joist in the dim light of the barn, haunted Frederick forever. The crack of the whip, the blood,
and the pain. It was all too much for a child to bear. His aunt's screams echoed in his mind, fueling a fire of rage and hatred for the man who wielded power over them. But even in the darkest moments, Frederick found a spark of resistance. He would not bow to tyranny. As Captain Anthony stood on the small boat in the Chesapeake Bay, he was the picture of calm authority. The water stretched out before him, its endless horizon as boundless as his cruelty. The sunlight reflected off the water's surface, creating a serene image, one that contrasted sharply with the torment he caused on land. Frederick, far from this scene, could feel the weight of Anthony's power, but he also felt the strength of his own resolve. He would one day escape this world. Overseer Plummer was a man whose cruelty was as fierce as the heat of the day. His face, twisted with rage, was a constant reminder of the terror that reigned over the plantation. With a whip in hand, he struck fear into the hearts of those who dared to disobey. Frederick and the others trembled beneath his gaze, but in the depths of their fear, there was also defiance. They were not broken. They could endure, and one day, they would rise. Under the shade of a grand oak tree, Frederick Douglass sat in quiet contemplation, the horizon before him glowing with the first light of dawn. His heart was filled with a newfound determination. He was no longer just a boy. He was a man with a purpose. The Bible in his hands was a symbol of hope, and with each turn of the page, Frederick began to see a world beyond the fields, a world where freedom was possible. His journey would not be easy, but it was one he would undertake with unyielding resolve. Years had passed, and Frederick Douglass stood before a crowd, no longer a boy in a cotton field, but a powerful orator, his voice carrying the weight of his journey. His words, sharp and clear, echoed through the hall, calling for the abolition of slavery and the fight for freedom. The audience, diverse and hopeful, hung on his every word. His presence commanded respect, for Douglass was no longer just a man. He was a symbol of liberation. His voice would inspire generations to come, for he had found his true purpose, to speak for those who could not. फ्रेडरिक डगलस, जो अमेरिकी इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक हैं, ने असंभव चुनौतियों को पार करते हुए स्वतंत्रता और न्याय की आवाज बनने के लिए संघर्ष किया। यह वीडियो उनके जीवन की यात्रा का अनुसरण करता है, जो मैरीलैंड के ग्रामीण क्षेत्र में जन्म से लेकर एक नेता और उन्मूलक के रूप में उनकी वृद्धि तक का विवरण प्रस्तुत करता है। उनके जीवन के संघर्षों को देखें, जैसे उनकी प्रारंभिक वर्षों की दासता, मां से अलग होना और उनके अपहरणकर्ताओं की क्रूरता, साथ ही उनके स्वतंत्रता की खोज में अद्वितीय साहस और संघर्ष का दृढ़ संकल्प। मैरीलैंड के ग्रामीण क्षेत्र में एक बच्चा पैदा हुआ था, जिसका नाम था फ्रेडरिक डगलस। उसका भाग्य अब भी अनदेखा था। जब वह एक घास के रास्ते पर नंगे पांव बैठा था, उसके चारों ओर बांस और कपास के पौधे उगे थे। पीछे की तरफ एक पुरानी झोपड़ी थी और उसके आसपास विस्तृत खुले खेत थे, जो उसकी दुनिया का हिस्सा बन गए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझ थी, जैसे वह जानता था कि उसकी यात्रा सरल नहीं होगी। यह था एक साधारण प्रारंभ, लेकिन यह वही प्रारंभ था जो उसे प्रतिरोध और सहनशीलता की ओर ले जाएगा। फ्रेडरिक बस एक बच्चा था, जो बागान के बच्चों के साथ खेलता था, हंसता, कूदता और सीखता था, लेकिन उसके भीतर एक अनकहा फासला था। उसके कपड़े फटे पुराने थे और वह दूसरों से अलग था। उसे उन बच्चों के बीच जो कुछ दिखता था, वह बस उसका सपना था। वह क्या था और उसका उद्देश्य इस दुनिया में क्या था, यह सवाल उसे परेशान करता रहा। वह अपने भीतर की उलझन महसूस करता था और यही सवाल उसके दिल में हमेशा बने रहते थे। वह पल जब फ्रेडरिक डगलस को अपनी मां से अलग किया गया, उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। एक रोते हुए शिशु को एक कड़े कुली के हाथों में ले जाया जा रहा था और उसकी मां हैरियट बेली अपने बेटे को खो देने की पीड़ा में बेतहाशा हाथ फैलाकर खड़ी थी। वह कटा हुआ रास्ता
जो उन्हें अलग करता था वह धीरे धीरे बढ़ता गया। उसकी मां के आंसू और एक बेटे का वह एकांत दर्द उसे हमेशा के लिए छा गया। अब से उसकी यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो उसे कभी नहीं लौटने देगी। हैरियट बेली, जो अपनी संतान से बिछड़ चुकी थी, कभी हार नहीं मानी। रात के अंधेरे में वह छिपकर जंगल से गुजरती और अपने बेटे के पास पहुंचती थी। उसकी पांवों में थकावट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उम्मीद थी। वह जब छोटे से झोपड़े में प्रवेश करती और फ्रेडरिक का हाथ पकड़ती तो उनका प्यार समय और परिस्थितियों के परे था। उनकी आंखों में एक छिपी हुई आशा थी कि एक दिन उनकी तकलीफें खत्म होंगी और उनकी प्रेम की दीवार कभी टूटेगी नहीं। एक दिन, वह दिन आ गया जब हैरियट बेली का शरीर इस दुनिया को छोड़ गया। उस दिन आकाश भी अंधेरे बादलों से घिरा हुआ था और एक खाली मैदान में उसकी सादे कब्र के पास फ्रेडरिक बैठा था। उसके चेहरे पर गहरा शोक था। उसकी मां को खोने का दुख अब जीवन भर उसके साथ रहेगा। लेकिन वह समझ गया था कि दुनिया के इस क्रूरता में केवल प्यार ही था जो हमेशा अमर रहेगा। ये दुख और अकेलापन उसे और भी ताकत देगा, क्योंकि वह जानता था कि उसे अपने रास्ते पर चलना होगा। एक दिन फ्रेडरिक डगलस ने सुनी एक कानाफूसी, जिसने उसकी पहचान के रहस्य को खोल दिया। किसी ने कहा था कि उसके पिता एक और व्यक्ति था, लेकिन वह व्यक्ति कौन था, वह कभी जान नहीं पाया। यह गम, यह सवाल उसके दिल में घर कर गया और उसने खुद से यह सवाल किया, क्या वह भी इस यात्रा का हिस्सा था या वह बस एक अनजाना नाम था? वह कहानी जो अधूरी थी उसे आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा देती है, लेकिन साथ ही यह एक दुखद सच्चाई को छुपाती है। गर्म धूप में फ्रेडरिक डगलस और बाकी बच्चे बागान में काम करते थे। उन छोटे हाथों में थकावट थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प था। आसपास के कपास के पौधे जो जीवन और मृत्यु के बीच झूलते थे, उनके काम में शांति नहीं थी। अधीनस्थों के घोड़े की ध्वनि और उनकी ताड़ना का डर उनके दिलों में समाया हुआ था। लेकिन फ्रेडरिक जितनी बार भी थक कर बैठता, वह जानता था कि वह कभी न कभी इससे बाहर निकलेगा। उसकी आत्मा टूटने से इनकार करती थी। कैप्टन एंथनी की क्रूरता ऐसी थी जो किसी भी हद तक जा सकती थी। उसके हाथ में चमड़े की छड़ी और उसकी आंखों में एक भयानक डर था। वह अपनी चाची को एक लकड़ी की चौखट से बांधकर मार रहा था। उसकी चाची के शरीर पर खून की धारें और उसके चेहरे पर तड़प थे। फ्रेडरिक के छोटे दिल में एक गहरी हूक थी और वह जानता था कि यह सब बदलने का समय एक दिन जरूर आएगा। उस दिन को टालना नामुमकिन था। कैप्टन एंथनी जब चेसापीक खाड़ी में अपनी छोटी नाव पर खड़ा था तो उसकी आंखों में एक शांत क्रूरता थी। पानी की सतह पर धूप का प्रतिबिंब और आकाश की नीली छांव उसे कभी नहीं रोक पाई। वह दुनिया में ताकतवर था, लेकिन फ्रेडरिक के भीतर एक अग्नि जल रही थी जिसे वह किसी दिन बाहर ला देगा। वह क्षण बस एक प्रतीक था और फ्रेडरिक का हौसला और मजबूत हो गया था। ओवरसियर प्लमर एक क्रूर व्यक्ति था जिसका चेहरा नफरत और गुस्से से भरा हुआ था। उसका हर कदम बागान के बच्चों और गुलामों के दिल में डर भरता था। उसका हर वार एक शोर था और उसके आसपास की हवा भी डर से कांपती थी। फ्रेडरिक और उसके साथी डर के बावजूद उसकी ताड़ना से डरे नहीं। उनका हौसला कभी टूटने नहीं पाया। यह तिरस्कार उन्हें ज्यादा मजबूत करता गया। वृक्षों की छांव में फ्रेडरिक डगलस बैठा था। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। सूरज की हल्की किरणें आकाश से गिर रही थीं और वह भविष्य को देखता था जहां एक दिन वह स्वतंत्र होगा। उसकी गोदी में एक पुराना बाइबल था और उसके माथे पर विश्वास और आशा का चिन्ह था। उसका रास्ता कठिन था, लेकिन वह जानता था कि एक दिन वह अपने बंधनों को तोड़कर आजादी की ओर बढ़ेगा। वर्षों बाद फ्रेडरिक डगलस अब एक महान वक्ता बन चुका था। वह एक मंच पर खड़ा था और उसकी आवाज जो पहले चुप थी, अब सभी को सुनाई दे रही थी। वह समाज की असमानता और गुलामी के खिलाफ आवाज उठा रहा था। उसकी बातों में एक ऐसा प्रभाव था जो लोगों के दिलों को छू रहा था। वह अब सिर्फ एक आदमी नहीं था, वह संघर्ष और स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुका था। उसकी आवाज ने युगों तक लोगों को प्रेरित किया, क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी।